Okay, so today we are going to start the last part of evolution. ठीक है, एक सेपरेट पेज में लिखो the last part of evolution, that is the geological time scale. Okay, so give the heading geological time scale. ठीक है, give the heading geological time scale. Now, though NCERT did not directly mention about this part, geological time scale, still NCERT में एक डायग्राम है. नीट में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, बट स्टिल विल फोकस, है ना, एज दिस ईयर्स क्वेश्चन वाज ऑलरेडी टफ, क्या पता आ जाए. सो टुडे विल डू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. नाउ बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू from the origin of the universe to the origin of earth, to the origin of life, to the origin of human, ये जो टाइम स्केल है, दिस टाइम स्केल इज डिवाइडेड इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स. सबसे बड़ा जो टाइम स्केल है इसको हम बोलते हैं ईऑन. क्या बोलते हैं? ईऑन. ईऑन के बाद आता है इरा. ठीक है, इरा के बाद आता है पीरियड. पीरियड के बाद आता है इपॉक. क्या आता है? इपॉक. सो द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज डिवाइडेड इनटू 4 फ्रेगमेंट्स, है ना. व्हाट आर द मेन 4 फ्रेगमेंट्स? सबसे बड़ा जो टाइम स्केल है वो है ईऑन. ये सुन लो, ईऑन के बाद आता है इरा. इरा के बाद आता है पीरियड. पीरियड के बाद आता है इपॉक. व्हाट एक्चुअली डज दिस मीन? वन ईऑन सिंपली मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है, वन ईऑन मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. सो ईऑन रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स. इरा represent lakhs, period represent thousands, epoch represent hundreds. समझ में है ना. ये है 10 लाख, ये है 1 लाख, ये सुनो, ये है 1000 एंड इसमें है hundreds. So in this way the time scale is divided. So 1 eon is equal to 1 million years. ये सुनो. So that's how the time scale is divided. So can I say that many epochs will join to form a period, many period will join to form a era, many eras will join to form a eon? Yes or no? Now carefully look at this graph or in this diagram, in this photo. You can see that this is 4600 million years ago. And this is today 0, right? Now 4600 million years ago to 552 million years ago, ये जो पूरा टाइम स्केल है, ये सुनो, ये जो पूरा टाइम स्केल है, जिसको वी कॉल इट एज प्रीकैम्ब्रियन. क्या बोलते हैं हम इसको? प्रीकैम्ब्रियन. सो प्रीकैम्ब्रियम इज अ ईऑन. व्हाट इज प्रीकैम्ब्रियन? प्रीकैम्ब्रियम इज अ ईऑन. सो व्हाट it represents 4600 million years ago to 542 million years ago, right? Then from 542 million years ago till today, this is Phanerozoic. This is Phanerozoic. So we have 2 eon. One is Precambrian and one is Phanerozoic. So Precambrian represents from 4600 million years to 542 million years. Yes or no? This is Precambrian, and from 542 million years to till today, this is Phanerozoic. Right? Now, as I have said, many era, yes or no, many era will join to form a eon. Yes or no, many era will join to form a eon. अभी देखते हैं, प्रीकैम्ब्रियम में 3 इरा था. एक था हेडियन, एक था आर्कियन, एक था प्रोटेरोजोइक. ये सुनो, क्या क्या था?
एक था हेडियन, एक था आर्कियन, एक थे प्रोटेरोजोइक. What happened in Hadean? During the Hadean era, Earth was formed. During the Archean era, Earth crust was formed. And during the Proterozoic era, life begins in the sea. You can easily forget these two, but you can't forget this one. That in the Proterozoic era of the Precambrian Eon, life begins in the sea. Hi, Anna. In the Proterozoic era of the Precambrian Eon, life begins in the sea. पूरा बनाओ, पूरा टेबल बनाओ. सो हेडियन में अर्थ फॉर्मेशन, आर्कियन में अर्थ क्रास्ट फॉर्मेशन, प्रोटेरोजोइक में क्या हुआ? लाइफ बिगिंस इन द सी. ये सुनो, इन प्रोटेरोजोइक लाइफ बिगिंस इन द सी, है ना. सो दिस इज आवर फर्स्ट इयन, दैट इज प्रीकैम्ब्रियन. So Precambrian is relatively a very age old eon जहाँ पे from the starting of the earth to the starting of the life है. Life का evolution is not discussed here, but earth का formation and earth का evolution has been discussed here. So in the Precambrian eon we have three: Hadean, Archean, Proterozoic. Proterozoic में लाइफ हैड इवॉल्व इनसाइड द सी. इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इयन, दैट इज फेनेरोजोइक इयन. ये सुनो, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इयन, एंड द नेक्स्ट इयन इज फेनेरोजोइक इयन, है ना. और फेनेरोजोइक इयन में 3 एरा है: पैलियोजोइक, मीसोजोइक, Cenozoic. Yes or no? How many eras are there? 3 eras. What are the 3 eras? Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. So in the Phanerozoic Eon, we have 3 eras: Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic. Yes or no? Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic. Now, starting from the origin of life to the diversification to origin of fish, origin of amphibians, origin of mammals, to the origin of human being, that is being discussed in this Phanerozoic Eon. And this Phanerozoic Eon has 3 forms: Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic. Now if we talk a little about evolution, we know that evolution occurred in the earth, right? Human had become diversified, become more complex, धीरे 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 more advanced organism आने लगा. But do you know that evolution solely does not depend on the earth crust? It also has a very significant, our planetary system, our astronomy also has a significant role, significant contribution in the development of life. How? Why only it is that earth has life and no other planet has life? One of the sole reason that earth only has life is that whenever we were in class 1-2, we had been taught that the earth rotates around the sun. While the earth rotates around the sun, it has an angle, it makes a degree, that is 23.5 degree, है ना. एक डिग्री में अर्थ टिल्ट होता है और टिल्ट होके अर्थ सन की ओर रिवॉल्व करता है. ये सुनो, अर्थ ऑल्सो हैज अ सेलेस्टियल बॉडी, दैट इज मून. नाउ व्हाइल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. नाउ सन exerts a gravitational force on earth. Similarly, moon also exerts a gravitational force on earth. अर्थ सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, लेकिन मून का डिस्टेंस कम है. Yes or no? Now, Earth rotates anti-clockwise. Earth rotates, this is clockwise, right? But Earth rotates anti-clockwise. लेकिन जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है क्लॉकवाइज. Yes or no? और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही देयर इज ऑकरेंस ऑफ टाइड्स, ज्वार भाटा. Yes or no?
Now because of the reason that tides occurs, that is one of the sole reason that life had become diversified. We'll tell how. We know that Haldane said that about hot dilute soup. Haldane mentioned about hot dilute soup, that is ocean has been mentioned as hot dilute soup. In the ocean the first life form arose. Now after the first life form arose in the ocean में life का diversification होने लगा. ओशन में टाइड्स आया. Some organism had been left in the seashore, and because of the reason that some organism had been left in the seashore, from their struggle begins, and that struggle led to the origin of land animal. From there started land plants, as the first plant that was there was actually algae that were aquatic. After then the land plant started bryophytes, इसके बाद pteridophyte, gymnosperm, angiosperm. So that's how life arose. And even more interesting thing is that as evolution is occurring, there are beliefs, and also there are many articles by prominent scientists that after 1 lakh to 2 lakh years from now, the new species, the new human being that is going to develop will have a 50-50 aspect ratio. Now what is that 50-50 aspect ratio? As our life is becoming very sedentary, means we are sitting in a place and doing all the work without hustling, without going around like our primitive men. Our lifestyle has become so sedentary, our brain is getting so much developed that after 1 lakh to 2 lakh years, the new form of human being will have 50% of the body as head, and remaining 50% will be the entire part of the body. So head will become that much big, and remaining body will shrink, as the head will do all the function. They will sit at a place and do all the work, and their height will also get diminished. So that's how the new species of human will look like. Now come to the Cenozoic Eon. Now Cenozoic Eon is divided into 3 parts. What are the 3 parts? Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. Now let's understand this era, that is Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. As I have said that eras are divided into periods. Periods are divided into epochs. We won't discuss about epoch because बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हारे एनसीईआरटी में है ही नहीं. So we will rest up to period. So eras, Paleo, Meso, Ceno. Now come to Paleozoic era. Paleozoic era is divided into many periods. First period is called as Cambrian. Second period is Ordovician. Third, Silurian. Fourth, Devonian. Fifth, Carboniferous. Sixth, Permian. What are the different period? Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous and Permian. Now let's first begins at this period, that is 542 million years ago. So 542 million years ago, that's the time when in the sea life had started to become diverse. So 542 million years ago, first fish arose. Where? In the sea. Yes or no? And first chordates developed. Chordate means animal that have a backbone. Chordata. Yes or no? So in 542 million years ago, in the Cambrian period, लिखो first fish developed and first chordates developed. Yes or no? First fish developed and first chordates developed. Now फिर से बोल रहा हूँ, in the Paleozoic era of the Cenozoic Eon, in Cambrian period, the first fish developed and first chordates developed. Next we have the Ordovician. सिर्फ नाम लिखो Ordovician. Ordovician में एनिमल लाइफ का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, मतलब ओशन में डिफरेंट टाइप का डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दिया. आज भी ocean is the most diverse part of our planet, and nearly 90% of our ocean life is still undiscovered. Yes or no? These are called as deep sea creatures, है ना? They are still undiscovered. So first is Cambrian, इसके बाद है Ordovician. Ordovician में डाइवर्सिफिकेशन होने लगा. इसके बाद है Devonian, Silurian. अब Silurian में क्या हुआ? फर्स्ट वास्कुलर प्लांट डेवलप्ड, क्योंकि
ओशन से धीरे धीरे लैंड में ट्रांसफर होने लगा, और इन द सिल्यूरियन पीरियड फर्स्ट वास्कुलर प्लान डेवलप्ड. व्हाट डू यू मीन बाय वास्कुलर प्लान? Pteridophytes. What do you mean by the vascular plant? Vascular plant means pteridophytes. So in the Silurian period, pteridophyte developed. इसके बाद Devonian period. Devonian period में लाइफ का डाइवर्सिफिकेशन होने लगा लैंड में. So amphibians developed. Are they solely land creature? No. बट लैंड में आने लगा, लैंड में सर्वाइव करने लगा, क्योंकि टाइड की वजह से आ जाता था, अब तो सर्वाइव करना होगा. दे स्टार्टेड सर्वाइविंग. So in the Devonian period first amphibians developed, है ना. In the Devonian period first amphibians developed. ये सुनो. इसके बाद है कार्बोनिफेरस पीरियड, जहाँ से क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज़्यादा है. कार्बोनिफेरस पीरियड. व्हाट हैपेंस इन द कार्बोनिफेरस पीरियड? कार्बोनिफेरस पीरियड में एम्फीबियन से क्या डेवलप हुआ? एम्फीबियन से रेप्टाइल डेवलप हुआ. क्या डेवलप हुआ? रेप्टाइल. सो फर्स्ट रेप्टाइल्स हैड बीन डेवलप्ड. ये सुनो. तो कार्बोनिफेरस पीरियड में फर्स्ट रेप्टाइल्स वे डेवलप्ड. ये सुनो. सो कार्बोनिफेरस पीरियड में फर्स्ट रेप्टाइल्स हैड बीन डेवलप्ड. कार्बोनिफेरस के बाद आया पार्मियन पीरियड. अब पार्मियन पीरियड में क्या हुआ? रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ कार्बोनिफेरस पीरियड में. डेवलपमेंट होने के बाद इसके बाद एक ज़माना था जब रेप्टाइल्स दुनिया को राज करता था, और ये पार्मियन पीरियड में रेप्टाइल्स बिकेम डाइवर्सिफाइड. डिफरेंट वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स गेट डेवलप्ड. धीरे धीरे समटाइम रेप्टाइल का साइज भी बढ़ने लगा. ये सुनो. सो इन द पार्मियन पीरियड रेप्टाइल्स बिकेम डाइवर्सिफाइड. These were the periods of the Paleozoic era. Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, Permian. ये सुनो. इसमें से कैम्ब्रियन में फर्स्ट फिश, ऑर्डोविशियन याद करने का ज़रूरत नहीं, सिल्यूरियन टेरिडोफाइट फर्स्ट वास्कुलर प्लांट, डिवोनियन एम्फीबियन. ये सुनो. इसके बाद कार्बोनिफेरस मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्बोनिफेरस में रेप्टाइल्स, पार्मियंस में रेप्टाइल बिकम डाइवर्सिफाइड. ये दो याद करो, डिवोनियन याद करो, कार्बोनिफेरस याद करो. खत्म हो गया पेलियोजोइक एरा. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 251 मिलियन ईयर्स अगो दिस पेलियोजोइक एरा वाज ओवर. After the Paleozoic era comes the Mesozoic era. Mesozoic era is linked to the dinosaurs. Mesozoic era ये पूरा एक era, it was ruled by dinosaurs. Now Mesozoic era में क्या हुआ? रेप्टाइल्स डाइवर्सिफाई होने लगा. धीरे धीरे रेप्टाइल्स का साइज बढ़ने लगा. द अर्थ वाज रूल्ड बाय द रेप्टाइल्स. इसके बाद Mesozoic एरा में आया ट्रायासिक पीरियड. ट्रायासिक पीरियड में क्या हुआ? फर्स्ट मैमल्स डेवलप्ड एंड फर्स्ट डायनासोर्स डेवलप्ड. मैमल्स और डायनासोर एक ही टाइम में, नियरली एक ही टाइम में धरती में आया था, लेकिन मैमल्स कुड नॉट गेट डाइवर्सिफाइड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज डायनासोर का साइज इतना बड़ा हो गया. डायनासोर यूज्ड टू प्रीडेट द मैमल्स. As a result, mammals could not rule the earth. The earth was ruled by dinosaurs. So Triassic period में धरती में डायनासोर्स आया था. There came different types of dinosaurs. इसके बाद आया Jurassic period. Jurassic period is the period of dinosaurs. Jurassic period में dinosaurs was the predominant force of the earth. There started different diversification of dinosaur. There started development of different dinosaur, including the T-Rex, that is the Tyrannosaurus Rex. And also during that period, from the reptiles, birds also came. So first bird came. Even many dinosaurs also had feather like that. Yes or no? So first bird came in the Jurassic period. So Triassic period में डायनासोर्स का शुरू हुआ. जुरासिक पीरियड में डायनासोर ने रूल किया अर्थ को. ये सुनो. सो जुरासिक पीरियड में द अर्थ वाज रूल्ड बाय डायनासोर. अब जुरासिक पीरियड के बाद आया क्रेटाशियस पीरियड. क्रेटाशियस पीरियड में इट वाज बिलीव्ड दैट a large asteroid or a large meteor would have hit the earth, and when the large asteroid or the large meteor hit the earth, at that time dinosaurs got extinct. जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ तब रेप्टिलियन का जो पॉपुलेशन था वो कम हुआ.
अर्थ का नियरली बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ही एक्सटिंक्ट हो गया, तब फिर से नया करके अर्थ शुरू हुआ, और तब जब अर्थ शुरू हुआ क्रेटाशियस पीरियड के बाद, तब जाके मैमल्स का डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हुआ। इसके बाद से आज तक द अर्थ इज रूल्ड बाय मैमल्स। अर्थ में सबसे ज़्यादा मैमलियन पॉपुलेशन है, सबसे डाइवर्सिफिकेशन मैमल्स में है, और तब से फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर टिल टुडे द अर्थ इज डोमिनेटेड बाय मैमल्स। सो क्रेटाशियस पीरियड में एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, और एक चीज़, द फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट केम, दैट इज एंजियोस्पर्म। Yes or no? So along with the extinction of the dinosaur, the first flowering plant, that is angiosperm, came into being. इसके बाद आया हमारा टाइम, दैट इज सीनोजोइक एरा। सो ख़त्म हो गया पेलियोजोइक, ख़त्म हो गया मीसोजोइक, ख़त्म हो गया। मीसोजोइक में 3 पीरियड है, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रेटाशियस। ट्रायासिक में डायनासोर्स आया था, जुरासिक में डायनासोर डोमिनेट किया, क्रेटाशियस में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया, साथ साथ अर्थ में फ्लावरिंग प्लांट आया था। अब पेलियोजोइक ख़त्म, मीसोजोइक ख़त्म, अब आया सीनोजोइक एरा, दैट इज़ द मॉडर्न टाइम। अब सीनोजोइक एरा में 2 पीरियड है। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड टर्शियरी पीरियड, सेकेंड पीरियड इज कॉल्ड क्वार्टरनरी पीरियड। तो टर्शियरी पीरियड में क्या हुआ, डायनासोर तो एक्सटिंक्ट हो गया, मैमल्स का पॉपुलेशन आया, धीरे धीरे टर्शियरी पीरियड में मैमल्स का डाइवर्सिफिकेशन होने लगा। There started development of different types of mammal, and earth was started to be ruled by the mammals. So that was the tertiary period. इसके बाद आया quaternary period. Quaternary period में human started to evolve. So human evolution occurred in the quaternary period, and still we are now in the quaternary period. So quaternary period में human evolution हुआ from the Dryopithecus to Ramapithecus to Australopithecus to Homo habilis. Yes or no? Homo erectus, Neanderthal man, Cro-Magnon man. Yes or no? ये जो लंबा जर्नी चला, आज भी चल रहा है ह्यूमन इवोल्यूशन, और इट इज़ बिलीव्ड दैट आफ्टर lakhs of years the human will be 50-50 aspect ratio. Yes or no? So that thing, that's how the evolution of life occurred, and this phenomenon is called as the geological time scale. Off कर दो, ठीक है? This phenomenon is called